में मादनी ज़खायर के गैर कानूनी ठेकों का रेफरेंस वापस करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत के जज शब्बीर जुबैर शहजाद कियानी ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि मुल्जिमान पर 50 करोड़ से कम की करप्शन का इल्जाम है। नैब तरमीमी एक्ट के सेक्शन 5 के तहत 50 करोड़ से कम करप्शन वाले केसेस अदालती दायरे इख्तियार से बाहर हैं। नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत इस रेफरेंस पर मजीद कार्रवाई नहीं कर सकती। बदलते मौसम के साथ लाहौर में स्मॉग का खतरा बढ़ने लगा है। शहरी आलूदा फजा में सांस लेने पर मजबूर हैं। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 तक जा पहुंचा है। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। मजीद जान लेते हैं शाकिर आवान से। जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर फिजाई आलूदगी में एक मरतबा फिर सरे फहरिस्त आ चुका है। गुज़िश्ता चंद दिनों से लाहौर शहर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है और आज लाहौर का AQI 197 तक पहुंच चुका है, जिसे तिब्बी माहिरीन ने इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया है। इसके साथ साथ लाहौर शहर के इलाकों की बात करें तो लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का जो AQI है वो 300 से तजावज़ कर चुका है, जिनमें कोट लखपत के इलाका सरे फहरिस्त है। अनारकली, गुलबर्ग, माल रोड, जेल रोड और इसके साथ साथ यादगार के इलाके जो हैं वो आलूदा 3 इलाकों में शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि स्मोक से बचाव के लिए जो है वो हिफाजती इक़दामात ज़रूरी हैं। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें और बच्चों को घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से मना करें। जी। PTI रहनुमा आजम स्वाति को इस्लामाबाद में सीनियर सिविल जज शब्बीर भट्टी की अदालत में पेश कर दिया गया है। आजम स्वाति को गुज़िश्ता रात FIA साइबर क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया। FIA की जानिब से आजम स्वाति के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। स्वाति साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है, कानून की खिलाफवर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफवर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफवर्जी कोई नहीं, सिर्फ एक इल्जाम दिया है भाजपा का और ये खिलाफवर्जी नहीं। किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंट। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए हम।
PTI रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति इस्लामाबाद से गिरफ्तार, अदालत का 7 रोजा रिमांड पर फैसला महफूज। आजम स्वाति का पिम्स अस्पताल में मेडिकल कराने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में आजम स्वाति ने इल्जाम लगाया कि FIA और एजेंसियों ने उन्हें गिरफ्तार किया। जिला जाम शोरों में नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर सैलाब जदगान को ले जाने वाली मुसाफिर कोच में आतिश ज़दगी, एक ही खानदान के 18 अफराद जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी अफराद को जलती आग से इमरजेंसी दरवाजे से बाहर निकाला गया। मैयतें कराची से खैरपुर नाथन शाह उनके आबाई गांव रवाना कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया पर एक और मुबैना ऑडियो लीक सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और एक नामालूम शख्स इत्तेहादियों के मुआविन खुसूसी बनने पर गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में एक शख्स कहता है, अयाज सादे कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले मुआविन खुसूसी भी शेयर मांग रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा काज़िकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आस्ताना मेसी का इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म इजलास में इलाकाई और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेलारूस की सदर से मुलाकात। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 डाकू मारे गए। चारों मुल्जिमान इंतहाई खतरनाक और संगीन वारदातों में मुलव्विस थे। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। सीरीज में बांग्लादेश का पाकिस्तान के इस्लामाबाद मैग्निफिसेंट एट्रियम और एलिगेंट होटल लॉबी से आरास्ता, मेगा हाइपर मार्ट जैसी सहूलियात के साथ फुली इक्विप्ड हेल्थ एंड वेलनेस क्लब, स्टेट ऑफ द आर्ट मल्टीप्लेक्स सिनेमा, अट्रैक्टिव मरगला व्यूइंग डेक, luxurious restaurants and fine dining deck. For booking and details, call 111-333-333. A project of Zameen Developments, ACE Group and MIH Group. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है। हेडलाइंज आप जान चुके हैं। PTI रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति इस्लामाबाद से गिरफ्तार, अदालत का 7 रोजा रिमांड पर फैसला महफूज। आजम स्वाति का पिम्स अस्पताल में मेडिकल कराने का हुक्म। PTI रहनुमा सेनेटर आजम स्वाति इस्लामाबाद से गिरफ्तार, अदालत का 7 रोजा रिमांड पर फैसला महफूज। आजम स्वाति का पिम्स अस्पताल में मेडिकल करवाने का हुक्म। आजम स्वाति ने अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मैंने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की, मुझे एक ट्वीट करने पर गिरफ्तार किया गया, मुझे FIA और एजेंसियों ने गिरफ्तार किया, मुझ पर तशद्दुद भी किया गया। आजम स्वाति की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया है। स्वाति साहब, क्यों आपको गिरफ्तार किया गया? क्या आप पे एलिगेशन लगा है? एलिगेशन तो आपको मालूम है, कानून की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी कोई नहीं, आइन की खिलाफ वर्जी कोई नहीं। किसने गिरफ्तार आपको किसने की है? ये FIA ने। किस केस में? नहीं FIA, लेकिन एजेंसियों ने, मुझ पर जो तशद्दुद किया गया है वो एजेंसियों ने किया। तो गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कपड़े निकाले गए हैं पार्लियामेंटेरियन के, कौम और मुल्क को बता रहा हूँ। अब तुम्हारा हशर ये होगा, आपको गिरफ्तार किस जुर्म में किया गया? कानून की पासदारी नहीं। स्वाति साहब, किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया? ट्वीट करने पे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर काज़िकिस्तान में मौजूद हैं, जहां वो सीका सरबराही इजलास में शिरकत कर रहे हैं। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म ने वियतनाम समेत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से बातचीत की। दोतरफा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। अभी आप देख सकेंगे प्रोग्राम सुबह से आगे। PF Growth 3 Complete Nutrition, Complete Love। पाओ 12 GB डेटा, 300 दूसरे नेटवर्क मिनट्स, 3000 जैज मिनट्स और SMS, पूरा महीना 780 रुपए के बैलेंस में। डायल करो *706#। जैज सुपर 4G। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। Excellencies, distinguished heads of delegation,
Good morning and Assalamu alaikum. It's a great honor and privilege for me to address the 6th summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. And I am very grateful for the warm welcome and generous hospitality extended to me and my delegation in this beautiful city of Astana. Pakistan attaches great importance to the SICA platform. The conference has been playing an important role in enhancing cooperation and promoting trust and understanding on the Asian continent. We highly value Kazakhstan's leadership and deeply appreciate the vision offered by Kazakhstan in transforming SICA into an international organization through an incremental and consensus-based approach. Mr. Chairman, Pakistan is living through a colossal climate-induced calamity. Unprecedented rains and flooding that have submerged more than 1/3 of my country are without any doubt the consequence of global warming and climate change. The initial estimates of total loss to our economy is to the tune of over $30 billion. And I have spent the last many weeks going from one place to the other, watching devastation with my own eyes. I have embraced people, children, and of course those marooned in the water who have lost everything, perhaps even their dreams. And I have marshaled all the resources at my disposal for rescue, relief, and rehabilitation. But I am grappling with the sinking feeling that we just do not have enough at hand. The force of nature of climate change has truly overwhelmed us. What makes this situation even more tragic is that even though Pakistan is responsible for less than 1% of global carbon emissions, yet we are among the top 10 countries most severely impacted by climate change. This disaster may set Pakistan back by decades. More than 1,600 Pakistanis, including children, have lost their lives. Thousands of kilometers of road infrastructure and bridges are washed away. Entire villages have been swallowed up by raging waters. Cotton, wheat, and rice crops lie in ruins. Vast stretches of land today resemble an ocean. Navy boats run where once children played football and cricket. Mr. Chairman, Pakistan needs immediate help. Our 33 million climate refugees, that is more than the population of many countries. These climate refugees need to be rehabilitated, and today I am personally grateful to the UN Secretary General Antonio Guterres for having visited Pakistan last month. We are very thankful to the UN for the fresh flash appeal of $816 million for Pakistan earlier this month. Many countries have also pledged financial assistance and sent relief goods. On behalf of my nation, let me thank each and every one of them for their acts of generosity and empathy. And I can see many leaders sitting around this table who have been generously committing support to Pakistan, and I thank you all from the core of my heart. And ladies and gentlemen, we look forward to your continued support as we transition to the more
daunting phase of rehabilitation and reconstruction. And let me assure you, we are determined and we are committed by the grace of God that we will emerge stronger from these floods, and we shall, inshallah, bounce back in a very short period of time. Mr. Chairman, Pakistan's location offers a natural bridge and conduit among regional economies. The China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of the Belt and Road Initiative, has transformed the economic and connectivity landscape of the region. We invite our friends to take advantage of the opportunities for trade, business, and investment in Pakistan. Excellencies, 4 decades of conflict and instability in Afghanistan have taken a heavy toll on millions of Afghan people and imperiled regional peace and security. Of all the countries in the world, Pakistan has borne the most serious consequences of the conflict in Afghanistan. We have suffered over 80,000 casualties and economic losses of over $150 billion in the fight against terrorism. And finally, by the grace of God, we were able to beat terrorism of all shades and color in Pakistan. Not only in Pakistan, it has sent a great message to peace-loving world across the globe that out of these great sacrifices, Pakistan has been able to become a country instrumental in controlling terrorism and extremism. To this day, we continue to host about 4 million Afghan refugees on our soil. A peaceful, stable, united and prosperous Afghanistan is in the best interest of Pakistan, not only Pakistan, the entire region and the international community. We call upon the world to support the people of Afghanistan in their quest for sustainable peace, stability and development. Mr. Chairman, Pakistan's first priority is to revive rapid and equitable economic growth. To do so, stability in the region is most essential. Pakistan desires peaceful relations with all its neighbors, including India. However, until India brings its atrocities in occupied Kashmir to a grinding halt, a just and lasting peace will remain elusive. For 7 decades, India has defied the will of the United Nations, as reflected through the 2 UN resolutions on Kashmir. For 7 decades, India has trampled the will of the people of Jammu and Kashmir by denying them the right of self-determination. And for 7 decades, India has used repression to silence the voice of Kashmiris, demanding their inalienable rights. I would therefore urge all of you to look behind the gloss of Indian democracy and recognize the brutal nature of its policies in occupied Kashmir. In this terrorized valley of Kashmir, India brandishes democracy not through the ballot, through its bullet. Here, Indian democracy is known less for its rights and freedoms and more for its repression and brutality. The truth is, and hard and harsh fact is, that India today is a threat to its minorities, to its neighbors, to its region, and to itself. And yet, Your Excellencies, we are willing to engage with India for the sake of peace, prosperity, and progress in the region, because we cannot afford to have more poverty, unemployment on both sides of the border. We just cannot afford to deploy and commit our meager resources towards creating tension. Enough is enough. We need to really provide education, health,
and medicine and jobs to our children, millions of our children, both sides of the divide. And if we did not act speedily, posterity will not forgive us. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity will not forgive us. Therefore, I am absolutely ready and willing to have serious dialogue and discussion with our counterparts, Indians, provided they show sincerity of purpose and they show that they are ready to discuss issues which have really kept us at a distance over decades and creating tension, not promoting trade, not promoting investment. This has to come to a stop. And I am absolutely committed and ready to move forward, to provide an opportunity to our generations, to our future generations, and leave a legacy that finally we were able to realize the gravity of the situation. And finally, here we are, that we, with a great mind and great hearts, did a job which would provide peace, progress for all time to come. But the onus remains on India to take the necessary step for meaningful and result-oriented engagement. We also need to urgently find political solutions to the conflicts in the Middle East and elsewhere in Asia. A just and lasting settlement of the Palestinian question is essential for comprehensive peace in the Middle East. Mr. Chairman, we reaffirm our commitment to the SICA process and the concept of common, comprehensive, cooperative and sustainable security in Asia. These giants sitting on my right, on my left, Allah Almighty has blessed upon all of us and all of them huge bounties and resources. If we team our resources and efforts together, I have no doubts in my mind that Asia and joining parts can really stand up and walk with a sense of pride and achievement. Through meaningful interaction and constructive dialogue, we can build and bolster mutual confidence and trust. We are facing great difficulties, but I am undaunted by the sultry weather. I am one of those, along with you, who believe in eternal justice and believe in Allah Almighty. I have no doubt in my mind, with the support of people of Pakistan and with the support of our friendly and brotherly countries, Pakistan will and shall come out of this problem. Thank you very much. God bless you. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सीका कॉन्फ्रेंस से इस्लामाबाद मैग्निफिसेंट एट्रियम और एलिगेंट होटल लॉबी से आरास्ता, मेगा हाइपर मार्ट जैसी सहूलियात के साथ fully equipped health and wellness club, state-of-the-art multiplex cinema, attractive Margala viewing deck, luxurious restaurants and fine dining deck. For booking and details, call 111 333 333. A project of Zameen Developments, ACE Group and MIH Group. Brought to you by Zameen.com. हर पता हमें पता है. हर मौसम में मेरा चेहरा रहे बिना चिपचिप सॉफ्ट सॉफ्ट. बताओ कैसे? नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर हर मौसम के लिए. इसका विटामिन ई लाइट फॉर्मूला जिल्द में फौरी जज्ब होके दे बिना चिप चिप और सॉफ्ट सॉफ्ट स्किन. नया पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर. अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो. कैडबरी डेयरी मिल्क. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. डव के साथ डैमेज आपको नहीं रोकेगा. मैं कर्ल करती हूँ अलग दिखने के लिए. मेरे कलर्ड बाल हैं यूनिक. मैं स्ट्रेटन करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है. अपने बालों की तरह मैं हूँ अलग. गहराई से नश्वनुमा करे दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर क्योंकि आपके बाल हैं खास. नया डव इंटेंस रिपेयर.